Karan Goyal, Yes, sir. what is meaning of motion? Anything which changes its position. Very good. Change in position with respect to observer is called motion. Motion. Then what will be circular motion? In a circular direction. Motion along circumference of circle is called Circle. as circular motion. If this is center, this is point on the circle, what is this called as? Radius. Radius. When you put arrow here, it is called radius vector. Radius vector. It is a variable quantity. Angle between initial and final position. That means angle traced by radius vector in given interval of time is called as angular displacement, denoted by letter theta. For one full cycle, it is 2 pi radian. Then change in angular displacement with respect to time is called as angular velocity. SI unit is radian per second. Change in angular velocity with respect to time is called angular acceleration. Unit is radian per second square. Then if we did what is time period, it is time taken to complete one revolution. Frequency is number of revolution completed in 1 second. Then we got relation between omega and time period as, since angular speed is angular displacement upon time. So for one revolution, we know time is time period, angle is 2 pi. 1 upon t is called frequency. So omega equals to 2 pi n. This much we have done in last class for this chapter. One small thing. उसके बाद दो अच्छा derivation करेंगे. So as per your textbook, third chapter will get over. एक part रहेगा relative velocity, next lecture में I will teach. Relation between linear and angular speed. Linear means v and angular is omega. We know that omega equal to theta by t, same thing. So it is 2 pi upon time period. Now can anybody tell me capital T का meaning क्या है? Time taken to complete one revolution. Now we know speed is distance upon time, linear speed. I want v and omega का relation. v मतलब linear speed, omega is angular speed. तो कैसे भी करके टाइम पीरियड को इधर से हटाना है. टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. So can I say distance covered in one revolution equals to 2 pi r circumference. Now this part clear? Distance covered in one revolution is 2 pi r. Yes, sir. Okay. Yes. Since speed formula is distance upon time, so speed is v, and if time is time period, that means for me 2 pi r upon t is v. Hello? Yes, sir. So Yes, sir. that means omega will become 2 pi upon, wherever you see t, can you write 2 pi r upon v or not? From this, can you write? Tell her.
Yes. Yes, sir. 2 pi cancel. That means omega is v by r. This is relation between linear and angular speed. This is relation between linear and angular speed. Anybody who has not followed? Again, see, we know that angular speed is angular distance upon time. So anytime I don't know, but time period ka meaning I know. When t becomes time period, theta becomes 2 pi. But distance covered in one revolution is 2 pi r. So speed is distance covered upon time period. So omega is 2 pi upon time period is 2 pi r upon v. 2 pi cancel. Omega equals to v by r. This is relation between linear and angular speed. Please copy this much. Heading right down circular motion. Those who have joined today only. Actually, it is part of kinematics. Then slowly by taking extra lecture, I will make you parallel. Rajvardhan, Sandesh, Aryan, you all have followed this? Yes, sir. Yes, sir. Ritesh, Yes, sir. Yes, sir. करण गोयल, आप अभी आज ही ज्वाइन किए, समझा आपको बराबर? सर थोड़ा डाउट है अभी भी कौन सा पार्ट जल्दी बोल दो? ओमेगा का। हाँ देखो इधर, ओमेगा अभी ये पता है ना आपको, सर्कल में मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं, हाँ इसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं, बराबर ना? हाँ तो ये जो एंगल कवर करेगा उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं. अच्छा Rate of change of angular displacement with respect to time is called angular velocity. ओके Any doubt now? नो See, as you say, rate of change of linear displacement upon time, linear velocity. So Yes. angular displacement upon time is angular velocity. ओके Any doubt, then ask, huh? Because same thing we are moving ahead now. This part Okay. clear? Clear? यस Now see, 1 minute more. One full cycle means what angle? Full cycle. What is angle? 2 पाई 2 pi in 2 pi. radian. 2 pi. And what is time taken called as time period? यस I have to convert into linear. So linear speed is linear distance, मतलब ये पूरा distance in one time period. ओके Now I think clear, ना? हाँ ठीक है. Done. Okay. Everybody has completed? Yes, sir. Yes, sir. Next, write down uniform circular motion. Uniform circular motion. See, just now we said motion along circumference of circle with constant, motion along circumference of circle is called circular motion. But I am telling uniform circular motion. What do you mean by uniform motion? Constant speed. Constant speed. And No. velocity. So covering equal distances in equal amounts of time. Okay, but that itself means velocity is constant, na? Yes. But in our Yes, sir. circular motion, body is changing its position along circumference, तो इसका direction of speed हमेशा different होगा.
So never velocity will be constant, but speed we can maintain constant. Like if this is 5, this is 5, this is 5, this is 5. So I can say it is covering same distance in same time. Same distance in same time. But same displacement नहीं है. Because from A to B ये displacement है. And from B to C ये displacement. Direction change हो गया ना? Hello? Yes, sir. So can I say Yes, sir. motion along circumference of circle with constant linear speed, velocity मत बोलना, is called as uniform circular motion. This can be asked in your 11th standard exam, either in MCQ or defined. Motion along circumference of circle with constant linear speed is called as uniform circular motion. Clear this much? Hello, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Copy the definition. If you complete, please tell me, huh? Done, Done, sir. sir. Now we can see clearly if there is circular motion, then direction of velocity is along tangent. Is this direction of velocity changing or remaining same in circular motion? Sir, changing. Changing. sir. Variable. When velocity changes, what comes into play? Acceleration. Very good. Acceleration. Whenever there is change in velocity, there is always acceleration. Now we have studied that acceleration and velocity are in same direction. Here if acceleration is along tangent, then it can change the magnitude also. है ना? Yes. Acceleration इधर आया, उसका ही मतलब आपने फोर्स दिया ना बाय फॉर्मूला m में ये डायरेक्शन में, Yes, sir. तो ये डायरेक्शन में उसका स्पीड चेंज होएगा. स्पीड चेंज हो गया तो नॉन यूसीएम हो जाएगा. So for UCM, we should not have acceleration in this direction, मतलब along the tangent, नहीं तो velocity का वो magnitude को change करेगा. अगर magnitude को change कर दिया तो non UCM हो गया. That means वो ये direction में रहना चाहिए, perpendicular. तो इसका component इधर कभी नहीं आएगा ना acceleration का. तो ये एक वेक्टर है, मैंने सबको बताया पहले जो स्टार्ट से अटेंड किए. उसका दो कंपोनेंट हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल.
मतलब अगर ये दिस इज सपोज आई फ्रेम वन रेक्टेंगल, सपोज ये एक वेक्टर है, ये उसके दो पार्ट है ax ay, ये एंगल थीटा, ये वेक्टर a, तो वी से ax ay आर कंपोनेंट ऑफ a. Yes, sir. The process of splitting a vector into two or more than two vector is called as resolution of vector. Once again you understand resolution of vector wala process. The process of splitting one vector into two or more than two vector is called as resolution of vector. Now how we can split into two? So if a bar is a vector, from same starting point I can draw two vector perpendicular to each other. If one is horizontal, then guaranteedly the perpendicular wala will be vertical. So if this angle is theta and ax ay are vertical and horizontal and vertical component, so can I say cos theta is adjacent side ax upon hypotenuse a. So ax is a cos theta. Any doubt? No, sir. No, sir. What will be sine theta? This side is ay. This is ay, matlab ye bhi ay. So opposite side upon hypotenuse. That means ay is a sine theta. These are called rectangular component of given vector. That means you can split any vector into two parts. One is cos, other is sine. Tell me, if this is f, one is horizontal, other is vertical, here is theta, तो ये आ जाएगा f cos theta and F this is cos called theta. f sine Sine theta. theta. Absent theta. If this is weight mg acting downward and I get one component inclined, सेकेंड वाला फर्स्ट को परपेंडिकुलर, इधर थीटा, तो ये क्या आएगा mg cos थीटा और ये वाला mg sin थीटा. What are they called as? Rectangular component of given vector. Okay. One more. See, suppose this is one vector, इसको t लिखा, इसका दो पार्ट बनाया, vertical, horizontal. One vertical, then second is always horizontal because then only they will be perpendicular. If this is theta, then this is t cos, this is t sin. So don't buy it कि horizontal वाला cos होता है, vertical भी हो सकता है cos. Any doubt in component part? No, sir. No ना? एकदम actually difficult नहीं है, लेकिन हर एक point पे you have to be alert. So can I say if motion is uniform, circular motion, then there should be no acceleration acting along tangent. Because if acceleration acts along tangent, then this velocity ka magnitude will change. That means speed will change. Speed changes, then it becomes non-uniform circular motion. So to change this direction, that means to velocity, there must be acceleration, लेकिन tangent पे नहीं होना चाहिए. अगर टेंजेंट पे नहीं होना चाहिए तो ऐसा एक्सेलरेशन चाहिए. ऐसा वाला चलेगा क्या? ये वेलोसिटी है, इधर वाला एक्सेलरेशन चलेगा? ऐसा टाइप का इंक्लाइंड, ये भी नहीं चलेगा. बिकॉज इफ इट इज इंक्लाइंड तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा ना, तो फिर से एक कंपोनेंट मोशन में कर देगा ना उसका स्पीड को चेंज. बाउंसर जा रहा रहता है. हेलो,
Yes, sir. देखो इधर अगर इधर वेलोसिटी है बराबर, मुझे इसको चेंज नहीं करना है, मतलब क्या, इधर एक्सेलरेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए नहीं बराबर। चाहिए। तो एक्सेलरेशन इधर वाला नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। तो क्या ऐसा वाला चलेगा क्या? अगर ऐसा वेक्टर है मेकिंग सम एंगल थीटा विथ ये v, तो इसका दो कंपोनेंट आ सकता है ना, एक इधर cos और इधर एक sin। नहीं समझा आपको? समझा सर। तो ये कंपोनेंट इसका हाँ स्पीड सर। चेंज कर देगा ना, तो ऐसा वाला तो नहीं चाहिए मुझे। तो ऐसा वाला नहीं चाहिए, तो क्या ऐसा वाला चाहिए? नहीं चाहिए। ऐसा वाला चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा वाला कंपोनेंट देगा। ऐसा वाला चलेगा क्या? हाँ, यस। बस इसका Yes, कंपोनेंट। sir. हाँ, तो मतलब आई वांट एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम कौन सा डायरेक्शन में? तो सोचा ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि स्पीड को बदल देगा। ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि इसका कंपोनेंट भी स्पीड को बदल सकता है। लेकिन ऐसा चलेगा हाँ, बिकॉज इसका वाला कंपोनेंट कैनॉट बी वर्टिकल, क्योंकि ये खुद हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल will never have component in horizontal vertical. Inclined can have horizontal vertical. Inclined can have horizontal vertical. So can I say to produce uniform circular motion, we have to change the direction of velocity. Hence acceleration is required. This acceleration should not be along the tangent, should not be inclined, but it should be along radius. तो ये एक्सेलरेशन का एक नाम है, along the radius वाला, रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा? Radial रेडियल एक्सेलरेशन। why radial? because it is acting along radius. acting along the radius. डायरेक्शन किधर है इसका? टुवर्ड सेंटर है ना ये डायरेक्शन। Yes, sir. तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल। क्या नाम है इसका? सेंट्रीपिटल। Centripetal. सेंट्रीपिटल मींस टुवर्ड सेंटर एंड रेडियल मींस along the radius. Along the radius. This is called as centripetal acceleration. So पहले खाली एक्सेलरेशन कौन सा डायरेक्शन? Since the body is performing circular motion, hence the direction of velocity is changing, thus acceleration is present. But acceleration should not be along the tangent, otherwise it will become non-UCM. Also its component should not be along tangent, thus acceleration in uniform circular motion must be always perpendicular to the tangential velocity, also constant magnitude वाला and directed towards center वाला। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये फोर्स जो प्रोड्यूस करेगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। आई होप फॉलो। Yes, sir. चलो अभी लिखते हैं एक्सेलरेशन इन यूसीएल। acceleration in UCM. UCM means uniform circular motion. In UCM, the speed is constant, but direction of velocity is changing. Hence, acceleration is present. Velocity change हो रहा है मतलब acceleration is present. This acceleration, if along tangent or if it's
component is along tangent, then the speed will change and motion will become non-uniform. Motion will become non-uniform. Circular motion will become non-uniform circular motion. In UCM, speed is constant, but direction of velocity is changing. Hence, acceleration is present. This acceleration is if along tangent or its component is along tangent, then speed will change. Hence, motion will be non-uniform circular motion. Can I rub this much? Right. Write it properly, then I'm rubbing. Done. Okay. Hence, the acceleration in UCM must be always perpendicular to tangent. So their favorite MCQ is in UCM, what is angle between velocity and acceleration? It is always 90 degrees. Must be always perpendicular to tangent. Or you can say perpendicular to tangential velocity. It is always directed towards center. It is always directed towards center. Hence, called as centripetal acceleration. Then write heading centripetal force. Centripetal force. The force which produces centripetal acceleration is called as centripetal force. It's called as centripetal force. What is angle between velocity and acceleration in UCM? 90 degrees. 90 degrees. Correct. So if you have completed, then one very good derivation I am going to derive now. Can I clear this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. एक छोटा सा थियरी फ्रॉम वेक्टर. अब यह कंपोनेंट वाला पार्ट तो समझा करण आपको? हेलो करण? हाँ सर. हाँ. करण गोयल. हाँ, करण गोयल. हाँ समझा. ये एक वेक्टर है आर. हाँ, आर. तो इसका ये कंपोनेंट क्या होएगा? कैन यू टेल करण? ये वाला क्या होने वाला है? कॉस में क्या साइन में?
कॉस साइन कॉस 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 थीटा के बाजू वाला कॉस हमेशा, हाँ और ये दूसरा वाला साइन, ठीक है। साइन एक और बोलो जस्ट टू चेक, समझ गया क्या? ये एफ है, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, इधर किया थीटा, तो ये कितना होएगा? कॉस वेरी गुड। थीटा का बाजू वाला कभी भी कॉस, दूसरा वाला साइन। ओके अभी एक और पार्ट बता रहा हूँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो दोस्तों अटेंडेड फ्रॉम स्टार्टिंग, क्यों मैं बोल रहा था वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता है। अभी एक मिनट सुन लो पहला। व्हेन टू वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, when two vectors in magnitude and direction are represented by two sides of triangle taken in an order, in an order मतलब दोनों एंटी क्लॉकवाइज भी चलेगा, दोनों क्लॉकवाइज भी चलेगा, in an order, then third side drawn in reverse order represents resultant vector in magnitude and direction, तो इसको बोलते हैं resultant. So if this is a bar, this is b bar, this is resultant of a bar plus b bar. This is called triangle law of vector addition. When two vectors in magnitude and direction are represented by two sides of triangle, then a vector drawn in reverse direction is called resultant of two vector in magnitude and direction. Can you tell me here who is resultant? C is resultant because A and B are in one order. Tell me now who is resultant? Who is resultant? P. Because Q and R in one order, B उल्टा है. एक वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर, who is resultant? Sir, none of these. None of this. रिजल्टेंट इधर जीरो, रिजल्टेंट जीरो होएगा क्योंकि Zero. रिजल्टेंट ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा गया तो दोनों मिलके फिटूस हो गया, नो रिजल्ट। अब ये बताओ, ये एक रेडियस है R1, ये दूसरा रेडियस है R2, हु इज रिजल्टेंट? R2. R2, करेक्ट करेक्ट, R2 इज रिजल्टेंट। एक मिनट और कीप योरसेल्फ म्यूटेड नाउ। ठीक, ये सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म, ये सेंटर, दिस इज रेडियस एट सर्टेन पॉइंट P, थोड़ी देर के बाद वो रेडियस इधर पहुंचेगा, तो इसको मैं अगर R1 वेक्टर बोलूं, इसको R2 वेक्टर बोलूं, their magnitude is same but direction is different. हेलो, हेलो, या अरे नहीं नहीं चाहिए मैडम, कैंसिल कर दो मैडम। हेलो, हाँ, so OP is one vector which is radius vector R1 bar, OQ is another vector R2 bar, इसको मैं ज्वाइन करता हूँ और नाम देता हूँ इसको DR bar, क्योंकि P से Q तक चेंज DR bar. So can I say OP vector plus PQ vector is OQ vector. So PQ vector is OQ vector minus OP vector. OQ means final radius vector, OP is initial radius vector. Final minus initial को change ही बोलेंगे ना हम लोग। Can I call this is change? Yes. हाँ सर। अभी P से बॉडी Q पे गया, मतलब this thing is displacement also.
तो इसको ही हम लोग बोल सकते हैं यही डिस्प्लेसमेंट है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी बोलते हैं ना, अगर आपको हाँ डेफिनेशन। सर। चलो इतना समझा तो आपको ये नया डेरिवेशन जो करने वाला हूँ वो समझ में आएगा। हर एक के कॉलेज का ये गारंटेड क्वेश्चन। न्यू सिलेबस में ये चेंज किया नहीं तो पहले 12th में था ये। सी नाउ आई एम डूइंग फ्रॉम स्टार्ट। एनी डाउट यू स्टॉप मी इन बिटवीन। 10 घंटा लगेगा तो भी चलेगा मुझे, बट आपका दिमाग में सब जाना चाहिए। डिराइव expression for acceleration in uniform circular motion, that is UCM. Please write the heading. Just write heading, huh? Nothing else. Wrote heading? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. See, Yes, sir. I want acceleration. That means I want rate of change of velocity. And if I want velocity, then I want rate of change of displacement, which is same as rate of change of radius vector. मतलब indirectly मुझे radius vector चाहिए। फिर तो अगर radius vector मिला तो उसका डेरिवेटिव वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी का डेरिवेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको ही डेरिवेटिव भी बोलते हैं। करण गोयल, Yes, sir. ये करण, दो करण है अभी, मैं नाम बोल रहा हूँ। करण गोयल, rate of change of displacement is also called derivative, which is velocity. Okay? Okay. ठीक। अभी टेंशन थोड़ा भी नहीं लेना, नहीं तो टफ लगेगा। टेंशन नहीं ले तो मजा आएगा। देखो, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, मतलब मेरा डेफिनेशन के हिसाब से क्या चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ Change of वेलोसिटी चाहिए। velocity. Velocity. हाँ, अभी वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। Displacement. पर डिस्प्लेसमेंट सर। पर सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो रेडियस वेक्टर का चेंज है ना। Yes, sir. यस तो सर। इसका मतलब इनडायरेक्टली मुझे क्या चाहिए? रेडियस वेक्टर। Yes, radius. अब इतना समझा तो अभी आपको फुल समझ में आ जाएगा। एक मिनट, लिखना मत कुछ जब तक पूरा मैं नहीं बोलूं तब तक। एक सेकेंड रुको। कंसिडर अ बॉडी or we can say a particle performing uniform circular motion along circumference of circle with center O, angular velocity omega bar. Let the coordinate axis coincides with diameter such that center lies at origin. This is moving with uniform angular velocity omega bar. इसको बोलते हैं ओमेगा बार। फिर से एक बार है इधर तक। Consider a particle performing uniform circular motion along circumference of circle with center O, angular velocity omega bar. Let coordinate axis coincides with diameter such that center lies at origin. Let P be the position of particle at any instant t, such that radius vector at this position makes angle theta with x. So can I say, since omega is theta upon t, so theta is omega t? This much, any doubt? नो सर। Again, see, consider a particle performing uniform circular motion along circumference of circle with center O, angular velocity omega bar. Let the coordinate axis coincides with diameter
such that center is at origin. Let P be the position of particle at any instant t such that radius vector makes angle theta with x axis. So omega का speed से theta upon t formula, theta is omega. Let r bar be resolved into two rectangular components. Two rectangular components. इधर से मैं था vertical बना. Two rectangular component rx bar and ry bar. So this is r bar main vector. उसका दो पार्ट है, एक rx दूसरा ry. तो ये पैरेललोग्राम लॉ से इसको अगर मैं कंप्लीट करूं और इसको रब कर दूं तो ये ट्राइंगल ही बन गया ना. ये ry चार साइड बनाते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसको पैरेललोग्राम लॉ. तो जो स्टार्ट से अटेंड किए उनको मालूम है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम which has same starting point as two component is always resultant of that two vector. Yes, sir. तो इधर तक खाली डिफिकल्ट है, उसके बाद मुझे इजी लगेगा. अगेन आई एम रिपीटिंग फिल दिस. From start again I am repeating full. Consider a particle performing uniform circular motion along circumference of circle with center O, uniform angular velocity omega bar. Let the coordinate axis coincides with diameter and center lies at origin. Center lies at origin. Let P be the position of particle at any instant t such that radius vector makes angle theta at this instant. Therefore, theta equals to omega t, because omega is theta upon t by definition. R bar can be resolved into two components, Rx bar along x-axis and Ry bar along y-axis. This is center O, angular velocity is का omega y dash. Therefore, by parallelogram law, resultant R bar equals to x component plus y component. Please copy, draw the diagram. Then I'm explaining. You have to copy till this. Just draw the diagram first. Very important derivation. Every college will ask for 4 marks. Just draw the diagram, nothing else. Huh? If diagram completed, please let me know so that I will dictate from start.
Done, sir. Done? Done, sir. Okay. So 1 minute. Right. Consider a particle P performing uniform circular motion. Consider particle performing uniform circular motion along circumference of circle with center O, comma, angular velocity omega bar. Let coordinate axis coincides with diameter such that center lies at origin. Such that center lies at origin. Can I clear now? Yes, sir. Let at any instant t the radius vector r bar makes angle theta with x-axis. Therefore, theta equals to omega t. Let r bar be resolved into two rectangular components Rx bar, Ry bar respectively. Therefore, by parallelogram law, R bar equals to Rx bar plus Ry bar. Yes, completed now. Sir, just a minute. एक बार पूरा स्टार्ट से रीड कर लो. Those who have written till this.
Done till this? Yes, sir. Done. And have you read? No doubt anywhere? No, sir. Okay. Now there is one small concept of unit vector. A vector having unit magnitude in the direction of given vector is called as unit vector. A vector having unit magnitude in the direction of given vector is called unit vector. So if A bar is a vector, I divide by A, then this magnitude cancel, left out will be 1, and direction of A, such vectors Yes. are called unit vector denoted by cap. So A cap is unit vector along vector A. It is given by formula A bar upon A. So what will be unit vector of AX bar? AX divided by AX or not? Yes, sir. Yes, sir. AY bar का क्या होएगा? AY bar bar upon AY. divided by AY. A नहीं AY. AY. Yes. अभी इसका मतलब ये one आंसर देगा in the direction of X. X. Yes, sir. So there is one special alphabet I cap used for unit vector along X axis, J cap along Y axis, and K cap along Z. Z axis. Yes, yes. एक मिनट ना वापस. Actually vector related है ना, तो कोई late आया है नहीं समझा तो नहीं समझ में आएगा. That's why I'm explaining. So can I say AX bar upon AX is I cap? That means AX bar is AX into I cap. मतलब देखो क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग कर दिया इनफैक्ट एक साथ. सो व्हाट विल बी A bar? AY into J cap. What will be AZ bar? AZ into K cap. Yes. Those who have joined late, Yes. Nitesh, Rajvardhan, Sandesh, Aryan, and Karan Goel. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can you tell me how I can write Rx bar S in terms of I cap? Rx I cap ना? RX I cap. और इसको RY I cap. RY J cap. J cap. J cap. J cap. पूरा डेरिवेशन फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप सुनते जाना. Consider a particle P performing uniform circular motion along circumference of circle with center O, angular velocity omega bar. Let coordinate axis coincides with diameter such that center lies at origin. Let R bar makes angle theta at any instant t. Therefore, theta equal to omega t. R bar can be resolved into two components, Rx bar, Ry bar. Therefore, by parallelogram law, R bar equals to Rx bar plus Ry bar. This much you have written. Correct now? Yes, sir. अभी देखते जाना एंड तक, खत्म. फिर दिस इज सेम एज Rx I cap plus Ry J cap. लेकिन ये Rx was component थीटा का बाजू वाला ना. So this is nothing but R cos theta है फिर तो. हाँ, sir. Yes, sir. I cap plus R sin theta J cap. J cap. And theta क्या मिला हम लोग को? ओमेगा t. Yes, sir. ओमेगा t है ना ये. Yes, तो yes. R cos ओमेगा t I cap plus R sin ओमेगा t J cap. ये मेरा R वेक्टर हो गया. इधर तक कर लो. अभी इसके बाद एकदम सिंपल है, दो बार डेरिवेटिव. जस्ट do till this. Yes. Fixed derivation to be asked in exam, college exam for 4 marks.
Same way I told fixed definition of dimension is fixed. But mostly they will keep objective test. Their important is what is angle between acceleration and velocity in UCM. Remember 90 degree. Done, sir. Done, no? Tirtha and Vaishnavi, any doubt? No, Tirtha, sir. Nandini, any doubt? No, sir. हाँ, 2 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा. ऐसे तो समझ में आएगा, लेकिन छोड़ देंगे तो ये सीक्वेंस याद नहीं रहेगा. नाउ instantaneous velocity v bar equals to rate of change of radius vector. क्योंकि आपको समझाया मैंने, यही डिस्प्लेसमेंट है, यही dr बार भी है ना. So Yes. this is equals to, अभी जो स्टार्ट से प्रेजेंट है उनको एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि साइन ओमेगा टी साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. याद है क्या? cos x sir. हाँ sir. Yes, yes. और कॉस का होता है माइनस साइन एक्स. Minus sign. Minus Yes, sign. sir. दिस वी हैव टू बाय हार्ट. मैथ्स में आपको वापस है पूरा डेरिवेटिव. Yes, yes, sir. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स. कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स. Minus sign. लेकिन अगर साइन एक्स नहीं है, साइन 2x है, तो पहला सेम cos 2x इंटू 2 करना पड़ता है. मतलब उसको चेन रूल बोलते हैं, ये भी बताया था. और जो लेट ज्वाइन किया उनको मैं बताते बताते आ जाऊंगा इधर तक, लेकिन 10 दिन के बाद. तो चेन रूल मतलब क्या? अदर देन x हुआ तो उसका भी डेरिवेटिव लेने का. चलो इसका बोलो क्या आएगा? साइन 4x का डेरिवेटिव cos 4x Cos 4x इंटू 4. into 4. वेरी गुड. व्हाट इज साइन 5x का? Cos 5 5 into 5. cos 5x into 5. Yes. Now I want instantaneous velocity. So that velocity मिला तो acceleration मिलेगा. उसके लिए मुझे मैथ्स वाला डेरिवेटिव पता रहना चाहिए. तो साइन का मैंने आपको रटाया. साइन का डेरिवेटिव cos x. बट इफ इट इज नॉट sin x बट sin 2x sin 3x ऐसा कुछ है, तो फिर से उसका डेरिवेटिव 3x का 3 4x का 4. दिस इज फॉर्मूला. इन मैथ्स यू आर गोइंग टू डू इन डिटेल. सो नाउ फॉर मी इसका डेरिवेटिव लेना है. आर आई कैप ऐसे ही रहने दो. ये आर कांस्टेंट है, वो भी ऐसे ही रहेगा. कॉस का डेरिवेटिव इज माइनस Minus साइन. ये विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. ओके. प्लस जे कैप आर साइन का प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. सो वी गेट वी बार एस माइनस आई कैप आर ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी. इक्वेशन 2. गोयल. Yes, sir. हाँ, जस्ट बाय हार्ट. व्हाट इज साइन का डेरिवेटिव? कॉस. Of course. कॉस. कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन. Minus, sir. तो साइन 2x का डेरिवेटिव Uh, cos Sin. 2x okay. इंटू 2. Okay. ओके. साइन 3x का बोलो Cos 3x into 3. 3. तो साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा है ना. हाँ. ओके. नाउ कॉपी टिल इक्वेशन 2. copy it, sir. ठीक है. बाकी लोग ओके. लेट अदर्स आल्सो. एवरीबॉडी हैज कंप्लीटेड टिल दिस. No, sir. No, Yes sir. sir. आराम से करो, आराम से. डिफिकल्ट है, इतना इजी नहीं है.
If you got velocity, then we are interested in acceleration, which is rate of change of velocity. Copy this 2 line also. Completed now? Just a minute. Instantaneous acceleration, a bar equals to dv bar upon dt. Yes, sir. Sir. Fine. Wait, huh? Wait. Now अभी v वाला डेरिवेटिव मतलब I cap minus as it is constant है इसलिए r same omega same. What is derivative of that sin omega? cos ना, ऊपर देखो ना, v का फॉर्मूला है ना ऐसा, v बार इस माइनस sir, आई cos. आर, हाँ आई आर ओमेगा साइन ओमेगा टी था ना वो, तो आई एज इट इज, आर एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी इनटू ओमेगा. कोई शक? No, No, sir. ओके. प्लस जे वाला एज इट इज, आर एज इट इज, ओमेगा एज इट इज, cos ओमेगा टी का Minus माइनस sign. Minus sin omega. into omega. So a bar equals to minus I r omega square cos omega t minus j r omega square sin omega t. Is it followed till this? Kathan, what is common? Can you see anything common? yes, sir. Anything you can take Yes, common? yes. I can see RW. Yes, R and minus omega square. omega square. R भी common है, but I am not taking that हाँ, okay. out. Minus omega. माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लिया, तो मुझे ऐसा मिल गया ना अंदर, आई कैप आर कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप आर साइन ओमेगा टी. ये इक्वेशन 1 में आर है ना ये बेटा, देखो. Yes, sir. सो कैन आई से ए बार इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार, है ना? Yes, yes. So this is expression for acceleration in uniform circular motion. नेगेटिव साइन का मतलब r का उल्टा है ना, r का उल्टा तो माइनस होएगा ना, r तो आउटवर्ड है. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, देखो ये r बार ऐसा है ना, तो इसका ऑपोजिट वेक्टर ऐसा होएगा ना. सो इफ आई टेक r बार मल्टीप्लाई विथ माइनस तो ऐसा उल्टा आ जाएगा ना. सो नेगेटिव Yes. साइन इंडिकेट्स दैट acceleration is opposite to radius vector. Now can anybody tell me what is angle between radius vector and the acceleration in UCM? 180 degree. Superb. This is favorite. 180, sir. 180. So negative sign indicates that acceleration is opposite to radius vector. That अच्छा इतना लिख लो, चलो इतना लिखो. Please practice 2 times this, otherwise you will definitely forget what, howsoever intelligent you are. Done, sir. The last line you have done. Negative sign indicates Yes, that yes, acceleration is opposite to radius vector. Yes, sir. That is I dot E, that is it is directed
along radius but towards center, along radius but towards center, directed along the radius but towards the center. It is directed along the radius but towards the center. Hence called as centripetal or radial acceleration. Hence called as centripetal or radial acceleration. Written? Yeah, yes, sir. Okay. In magnitude of A bar will be minus omega square R bar. So magnitude में minus sign निकल जाता है ना? Yes. So in magnitude A is omega square R. Since we got omega as V by R, so I can say A is V square upon R square into R. That means V square by R. Also, A equals to omega square R. That means omega square R you can write as V upon omega. So A equals to V omega. Matlab acceleration can be written in three different ways: omega square R, V square by R, V omega. आज के लिए इतने. Please copy till this. In magnitude modulus sign डाल दो. So tomorrow evening extra lecture as it is. The timing is 9:30 to 10:30. Units and measurement. Okay, sir. So those who are attending that lecture, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ significant figures का rule. Okay, sir. Please stick to that planner which I have given, and today extra homework. These 2 times you have to do. Yes, sir. And if you snatch the time, I very well know you can complete in stipulated time, and still you can save the time. But उसके लिए रोज काम करना पड़ेगा. You can't wait for last moment. So Yes, sir. Yes, yes, sir. clear कर दो ये पूरा. Yes, sir. Done. Yes. देखो आज वाला पार्ट डिफिकल्ट वाला पार्ट था. So